gentleman who has a nasogastric tube inside it, along with following catheter, lying comfortably in bed, has a little bit of difficulty in following the commands. On eye examination, there is a doses of eye and on the left side, and the left eye is rotated outwards. So, what is your consolidated diagnosis now? The consolidated diagnosis left oculomotor nerve palsy and right-sided stroke. So it is crossed hemiplegia, most likely due to Weber syndrome. Right. How would you investigate this patient? I would like to I would like to do echocardiography of the patient. First of all, you will tell me specific non-invasive investigations. Then you will tell me if there is any specific invasive investigation. If there is. Yes. अगर है, अगर बनती है, अगर नहीं बनती तो ना से. फिर supportive जो आपकी baseline है वो बताएं. I would like to do the CT scan of the patient. तो फिर तुमने एक्ट क्यों बोली? Cases भी देना है तुम्हें. Yes, yes. हाँ. I would like to do the CT scan of the patient, and if needed, I would also recommend MRI. And then coming to the relevant, I would also like to check the lipid profile of the patient, and I would like to do carotid Doppler of the patient. And among the relevant examination, I would like to do ECG of the patient, and depending on that, I may also advise echocardiography. And among the other investigations, I would like to do a full set of baseline investigations, including CBC. What would you find in CBC? There may be polycythemia in the patient, which may have led to this finding. And so, did you find anything in general physical examination which is telling you that the patient is having polycythemia, or did you find pallor? No, I didn't find it. Why you are saying this? हंसाने वाली बातें नहीं करते होते तुम, ठीक है ना? आपने सिर्फ ये कह देना कि मैं इसकी ग्लूकोज लेवल चेक करूंगा, दैट इज रिलेवेंट. मतलब एज फार एज द रिस्पेक्टर्स आर कंसर्न्ड, लिपिड का ठीक है, एग्रीड. एको का ठीक है, एग्रीड. कैरोटिड डॉपलर का ठीक है, एग्रीड. ठीक है. हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट? It depends on the cause. However, if the cause is... We are talking about this patient. Yes. We are not going to book. Yes. इस मरीज को आपने मैनेज किया. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में. जब वो एग्जाम में आते हैं ना, और मैं पूछती हूँ कि हाउ वुड यू मैनेज, तो वो किताब का सफा याद करना शुरू कर देते हैं. ये मरीज आपके पास आया, अपने आप को थोड़ी देर के लिए सब्र करो कि तुम क्लिनिक में बैठे, तुम ही हो डॉक्टर, ठीक है, फीस तुमने ले ली है, और अब तुमने जो है पेशेंट को सही तरीके से मैनेज करना है. इस वाले मरीज को फॉरगेट अबाउट बुक्स, फॉरगेट अबाउट थ्योरी, मैनेज दिस पेशेंट. हाउ वुड यू? Yes, I would keep monitoring the blood pressure of the patient, and I would optimize the blood pressure. कितना? Ideally, it should be depends on the initial value of the blood pressure. And suppose it is 200 by 120. Yes, initially it won't be brought down, but after 3 days it would be brought down. Even if it is 200 by 120. सीडी की फाइंडिंग बतानी है, स्कीमिक है या एलर्जी है? हाँ, वो तो खैर वो तो इररिलेवेंट, मतलब वो तो ठीक है. ये बताओ ना, अगर 200 by 120 है तो आप उसको लोअर करेंगे या 3 दिन के बाद लोअर करेंगे? जहाँ तक मेरी नाक़ुस याददाश्त है वो ये कह रही है कि कम से कम उसको 180 तक तो ले आओ. 180/100 तक तो हो. 220/120 बहुत ज़्यादा. अच्छा चलो, व्हाट एल्स? Yes, I would, if the cause of the stroke is ischemic, I would give aspirin to this patient after NG is already passed, so the gag reflex is not intact, and I would maintain the fluid and electrolyte balance of the patient. I would monitor his urine output, and I would take care of his blood source by changing the posture regularly. I would arrange physiotherapy of the patient, and I would involve the occupational and physiotherapist for that. And What about speech therapist? yes. What about clopidogrel?
MRCP वाले तो रो पिटे हैं इसको कि क्लोपिडोग्रल दो, क्लोपिडोग्रल दो, Ideally, क्लोपिडोग्रल। after 14 days, clopidogrel should be. अच्छा ये मुझे कहीं नहीं मिला वैसे वन जब नाइस गाइडलाइंस है ना उसमें कि 14 दिन के बाद तो ये एस्पिरिन 300 mg रिकमेंड करते हैं। वो कर दी ना, उसके बाद उन्होंने क्या क्लोपिडोग्रल Clopidogrel. ये नहीं लिखा हुआ कहीं कि 14 दिन आप एस्पिरिन पे But रहें। in acute presentation, I would like to, we would give aspirin. And one thing more that after assessing it and depending on the time duration of the presentation, तो ये तो सबसे पहले बोलना चाहिए था। intravascular thrombolysis may Yes, be and thrombectomy can be done. thrombectomy may be done. हाँ। And it depends on the time window and the involvement of the area of the brain. How would you counsel this patient? Suppose मैं हूँ मरीज आपका, Yes. ठीक है, अब आप मुझे काउंसल करें, मैंने की मसला हो गया डॉक्टर साहब, दसो मैं ठीक हो जावांगा? ये जवाब है थोड़े वालों। नेगेटिव काउंसलिंग। There are नहीं बल्कि पंजाबी में बताता है भाई। हाँ कुछ इम्कानात है ने ठीक होंगे। ऐसा की मतलब है डॉक्टर साहब, मैंने सीधी गल करो, मैं पिंडू बंदा कि मैं होना है ठीक मैं कि नहीं होना। किसी हद तक जेड़ा वो कमजोरी रहेगी लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी ਇਹਦੇ ਚ। अच्छा कि इम्प्रूवमेंट की मतलब ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ लेकिन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਨੇ MRI CT ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਹੁਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਲੱਗ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਥੜਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਥੜਾ ਜੰਮ ਗਿਆ? चिकनाई ज्यादा हो जाती है या बाद उसका दिल ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਖਾ। लेकिन बाद औकात एक खून ਚ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।